So in today's lecture, we will try to finish these at least 2 points. That is, histamine, antihistaminic drugs, and ES2 receptor blockers, anti-allergic drugs, and anti-ulcer drugs, or anti-secretory agents, drugs used in the treatment of peptic ulcers. So those two chapters, we will try to finish in today's lecture, and tomorrow we will see the drug pump serotonin, okay, serotonin or tryptamine. So in this lecture we will discuss this antihistamines, histamine and antihistaminic drugs. That is from your autocoid chapter. Yesterday anthelmintics, I have finished anthelmintics, and today I will update the video of 20 minutes. So particularly today we are going to see autocoids in general introduction of autocoids, then histamine, its role and its receptors, then histamine 1 receptor blocking agent, that is those are used in the treatment of allergic condition, and then we will discuss ES2 receptor blockers, those are used as anti-secretory agents or drug treatment of. So autocoids, first autocoids. So there is a separate section which is given in the pharmacology or medicinal chemistry of your syllabus, autocoids. So autocoids means, auto means self, coids means hormone. Auto means self and coids means hormone. So autocoids means self releasing hormone. So these are the substances, these are the chemicals which are synthesized, stored and released locally. They are synthesized, stored and released locally. तो उसको synthesis locally cells में होता है, store होते हैं और उसका release भी होता है. And these are the hormones, these are the transmitters, and they have certain physiological role, and they are self-releasing. That's why they are known as autocoids. For example, in this category, you will find examples of histamine, serotonin, then prostaglandins, eicosanoids, etc., etc. So these are the self-releasing hormones. These are the autocoids. So out of these, we are not going to cover prostaglandins and eicosanoids. So here we will try to cover histamine and antihistaminic drugs, then serotonin and related drugs. First one is, these autocoids can be either divided into, depending on these autocoids, depending upon their chemical structure, they are divided into three categories. First one is amines. So those autocoids containing amine in the structure. For example, histamine and serotonin. These are the amine autocoids. Then again, lipid autocoids. For example, prostaglandins, then leukotrienes, then platelet activating factor (PAF). So these are the lipid in nature, and they are known as the lipid autocoids. So autocoids may be either amine in the nature like histamine, serotonin. Then it may be either lipid in nature. For example, prostaglandins, leukotrienes, and platelet activating factor. ये तीन लिपिड्स है, हिस्टामाइन, सेरोटोनिन, अमाइंस है. और इट मे बी आइदर पेप्टाइड लाइक ब्रेडिकाइनिन, एंजियोटेंसिन एंड कैलिडीन. So autocoids, they are divided into three types: lipid, amines and peptides, depending upon their chemical structure or nature. So out of this we are going to discuss histamine, its biological role, its pharmacological actions, then pharmacology of antihistaminic drugs or pharmacology of anti-allergic drugs. So histamine and antihistaminic drugs. So it is a general structure of histamine. You can see there is imidazole ring in the structure, ethyl amine. So imidazolyl ethylamine, that is nothing but the histamine. So histamine is a tissue amine. It is the autocoid. It is a tissue amine, locally synthesized, stored and released. Okay. So histamine is a tissue amine. It is a potent biogenic amine. It is synthesized from this imidazole and ethylene. So it is nothing but the beta imidazolyl ethylamine containing compound. It is widely distributed in the plant and animals. दोनों में भी होते पाया जाता है इसको, animals में भी, plant में भी. It is also present in the certain venom of bees and wasps. जो मधुमक्खी होती है उसके वेनम में भी हिस्टामाइन होता है, और दूसरे वेब्स जो है वाइपर्स वगैरह उसमें भी होता है हिस्टामाइन. So it is widely distributed. It is also found in some plants also. Then it is formed, how it is biosynthesized in the humans. Histamine is biosynthesized from by decarboxylation reaction. It is formed by decarboxylation of amino acid known as histidine. हिस्टिडीन नाम का अमीनो एसिड है, उसका डीकार्बोक्सिलेशन होता है, ठीक है, तो वहां से हिस्टामाइन बनता है. सो इट इज कैटेगराइज्ड बाय हिस्टिडीन डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम. ये एक एंजाइम होता है हिस्टिडीन डीकार्बोक्सिलेज. ये क्या करेगा हिस्टामाइन का, सॉरी, ये क्या करेगा हिस्टिडीन अमीनो एसिड का डीकार्बोक्सिलेशन करके हिस्टामाइन बनेगा.
It is present in the various biological tissues. कहाँ पे होता है ये? It is particularly found in the lungs. Majorly it is found in the lungs. It is also present in the your leukocytes, then basophils, then they are. It is concentrated in the mast cells. So it is present in the various biological tissues, majorly found in the lungs. Then the major portion of histamine is stored in the mast cells. Then it is also found in the circulating basophils, leukocytes, platelets, etc. etc. ये सेल्स में भी उसका प्रेजेंस होता है, इसमें स्टोर होता है. सो इन द मास्ट सेल दिस इज प्रेजेंट अलॉन्ग विद द 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामाइन एंड हिपेरिन. कि जो मास्ट सेल होते हैं, मास्ट सेल में हिस्टामाइन किसके साथ में होता है? हिपेरिन और 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामाइन, और इसको सेरोटोनिन बोलते हैं. दिस हिस्टामाइन विल एक्ट ऑन इट्स रिसेप्टर्स. There are different receptors, histamine receptor, namely histamine 1, 2, 3, 4. There are 4 histamine receptor. 4 हिस्टामाइन टाइप के रिसेप्टर होते हैं, उसको बोलते हैं H1, H2, H3, H4. ठीक है, H1, H2, H3, H4. सो एक बुक में दिया है कि all histaminic receptor means H1, H2, H3, H4 all are the G protein coupled receptor. ठीक है, लेकिन केडी त्रिपाठी में दिया है कि H1, H2, H4 are G protein coupled receptor, but H3 is a ion channel receptor. ये याद रखो. So histamine will be released and it will act on this receptor. So for to understand the actions of histamine, you have to you should know the locations of this receptor, locations, role and function of this receptor. ये receptor कहाँ पे होते हैं? अगर histamine इसके ऊपर जाके कंबाइन होने के बाद क्या करेगा? histamine इसके ऊपर जाने के बाद, कंबाइन होने के बाद कौन सा एक्शन दिखाएगा? histamine H3 receptor के ऊपर क्या एक्शन दिखाएगा? तो ये सब है, तो ये बुक में आप पढ़ सकते हो. इट्स अ बेसिक थिंग. अगेन आई हैव समराइज्ड ओवर हियर. हिस्टिडीन अमीनो एसिड विल बी डीकार्बोक्सिलेटेड टू फॉर्म a histamine. This is the structure of histamine. 4 बजे बोला तो. So again I have summarized. So your histidine amino acid will be decarboxylated into histamine. This is histamine. It will act on a, it will be synthesized, it will be stored in the different cells. Okay, so it is majorly found in the histamine is found in the lungs, then it is found in the mast cell. It is stored in the mast cell along with the heparin and 5-hydroxytryptamine. Then it is also found in the circulating platelets, then basophils and leukocytes. ये सब सेल में हिस्टामाइन होता है. ये ऐसे सिंथेसाइज होता है. हिस्टिडीन डीकार्बोक्सिलेशन हिस्टामाइन बाय हिस्टिडीन, it is synthesized by histamine decarboxylation. Okay. Now histamine after release, it will act on its receptor and then after that it will be metabolized. So histamine is metabolized by two enzymes, N-methyl detransferase and then diamine oxidase. MAO, monoamine oxidase. This diamine oxidase means MAO, monoamine oxidase, and carboxy orthomethyl transferase, that is COMT. So histamine is always taken by two enzymes, metabolized by two enzymes, COMT, MAO. It will metabolize COMT, COMT will metabolize histamine into N-methyl histamine and then it will again oxidized into methyl imidazole acetic acid. So the metabolism of histamine will, metabolic product of histamine is nothing but the methyl imidazole and acetic acid. हिस्टामाइन का जब मेटाबॉलिज्म होगा तो क्या मिलेगा आपको? मिथाइल इमिडाजोल. ठीक है, ये इमिडाजोल हो गया, ये मिथाइल हो गया, ये मिथाइल CH2 यहाँ से ब्रेक होके ये अमाइन है, अमाइन जो कंटेंट अमाइन ग्रुप निकल जाएगा, यहाँ पे एसिड ग्रुप आएगा, तो एसिटिक एसिड. मोनोअमीनो ऑक्सीडेज क्या करेगा? इट विल कन्वर्ट हिस्टामाइन इनटू इंडोल एसिटिक एसिड, इमिडाजोल एसिटिक एसिड, इमिडाजोल एसिटिक एसिड. So it is just synthesis, storage and release of histamine. There are different kind of receptor. I have told you histamine receptor. So histamine 1, 2, 3, 4, H1, H2, H3, H4. So each histamine receptor is located in the different organs. उसका location हर एक organ के भी organ पे उसका distribution है, उसका function भी अलग अलग होता है हर एक receptor का. तो H1 receptor का function क्या है? So फॉर एक रफ मैनर में एक रफ आइडिया देता हूँ आपको कि H1 रिसेप्टर जो है हिस्टामाइन 1 रिसेप्टर, सो इट इज एसोसिएटेड विद द एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन, इट इज एसोसिएटेड विद द एलर्जिक रिएक्शन, इट इज एसोसिएटेड विद द ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन. ठीक है, सो ये याद रखो H1 रिसेप्टर. H2 रिसेप्टर इज एसोसिएटेड विद द रिलीज ऑफ गैस्ट्रिक एसिड इन द स्टमक. कि H2 रिसेप्टर का स्टिमुलेशन अगर होगा तो वहां पे गैस्ट्रिक एसिड रिलीज होगा, या फिर क्या होगा कि मायोकार्डियम का कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ जाएगा. H2 receptor is present in the gastric acid as well as myocardium.
H1 receptor is present in the various tissues, and H1 receptor activation of H1 receptor by histamine leads to क्या होता है, it will leads to, it is associated with the increased cyclic guanosine 3-5 that phosphate, and that will convert CGMP, and that result in the, ये सब mechanism है उसको छोड़ो, result in the bronchoconstriction. So H1 receptor is related with the bronchoconstriction. आपका bronchial muscle क्या करेगा, constriction करेगा. Okay, then vasodilation, peripheral vasodilation, and जो भी tissue का vasodilation हो, increased vascular permeability and secretion मतलब जो glands होते हैं आपके वहाँ पे secretion कर, increased vascular permeability मतलब जो blood vessel में का जो blood है उसका जो content है उसके लिए permeability बढ़ा देगा और बाहर वो कंटेंट आ जाएगा ताकि वो आपको बाद में इडीमा वगैरह सब हो जाएगा, सूजन वगैरह हो जाएगा. So H1 receptor is related with the allergic condition. इतना याद रखो. These actions can be blocked by competitive conventional antihistaminic drugs. So H1 receptor blocker जो होते हैं वो anti allergic drugs होते हैं या फिर antihistaminic drugs. Now H2 receptor कहाँ पे होता है? It is present in the gastric gland and heart. So activation of this receptor by histamine or other agonist drugs will cause in the increase in the acid secretion. So it is associated with the increased acid secretion in the stomach and मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी, ये मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ा देगा, ब्लड प्रेशर बढ़ा देगा. These actions cannot be blocked by conventional antihistaminic drugs. So antihistaminic drugs will block H1 action, not H2 action. Okay, याद रखो. Histamine 3 receptor. This receptor is present in the brain. So regulation of neuronal release and turnover of histamine. That is known as auto receptor. यहाँ पे थोड़ा spelling mistake है लेकिन so H3 receptor is involved in the regulation and release control of histamine release in the brain. Okay, that is auto receptor. So it is related with the cognitive functions. So it is a biogenic amine which is responsible for the wakefulness of human being. मतलब वो आप जगह पे हो या नहीं, अटैचमेंट है या आपको नहीं, तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है हिस्टामाइन 3 रिसेप्टर, कि आप जागे हो या सो गए हो, wakefulness, it is responsible for the wakefulness. Okay, yes, the receptor is associated with the wakefulness, and that's why अगर हिस्टामाइन 3 रिसेप्टर आपको मतलब एक्टिव रखता है आपके ब्रेन को, तो हिस्टामाइन 3 रिसेप्टर जो भी एगोनिस्ट होंगे सो वो ज्यादा एक्टिव रखेंगे. दैट्स व्हाई few histamine 3 receptor agonists like pitolisant is a drug approved for narcolepsy. नार्कोलेप्सी मतलब ये स्लीप डिसऑर्डर होता है, कभी भी अचानक आपको नींद आ जाती है, ठीक है, नार्कोलेप्सी. सो पिटोलिसांट इज अ ड्रग यूज्ड इन द नार्कोलेप्सी. सो इट इज नथिंग बट द H3 receptor agonist. H4 receptor, so they are involved in the immunomodulation, immune cells, chemotaxis, immune response and inflammation. There are 4 kind of receptor of histamine. So this is just background. यहाँ पे एक आधा क्वेश्चन बनता है आपका जो सिंथेसिस एंड मेटाबॉलिज्म पे आ सकता है या फिर रिसेप्टर पे आ सकता है. तो जितने भी हिस्टामाइन के रिसेप्टर है H1, H2, H3, H4 जो डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट दिया है, तो एक कुछ बुक्स बोलते हैं कि सभी 4 रिसेप्टर्स, ऑल 4 हिस्टामाइन रिसेप्टर्स आर द G प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर. बट केडी त्रिपाठी बोलता है कि हिस्टामाइन 3 रिसेप्टर इज नथिंग बट द ion channel. Okay, then now this was histamine. तो हिस्टामाइन के ऊपर जो भी ड्रग्स एक्ट होंगे, जैसे आपका हिस्टामाइन एगोनिस्ट होंगे या फिर हिस्टामाइन एंटागोनिस्ट होंगे, ठीक है, मतलब हिस्टामाइन एगोनिस्ट, हिस्टामाइन एंटागोनिस्ट, ठीक है. तो मोस्टली हिस्टामाइन एंटागोनिक जो एंटागोनिस्ट ड्रग जो होते हैं यानी एंटी हिस्टामिनिक ड्रग जो होते हैं, दे हैव अ क्लिनिकल एप्लीकेशन एंड मोस्टली दे आर यूज्ड इन द थेरेपेटिक्स. बट जो हिस्टामाइन एगोनिस्ट ड्रग होते हैं मतलब हिस्टामाइन का काम बढ़ाने वाली, तो दे हिस्टामाइन एगोनिस्ट ड्रग जो होते हैं ये ऊपर वाला, so they will not find a much clinical application in the therapeutics. So that's why they are not discussed in the details. इनका कोई एप्लीकेशन नहीं है यहाँ पे. इसमें का सिर्फ एक ही ड्रग है बीटा हिस्टिडीन, ये ड्रग यूजफुल है, उसका यूज मैं बोलूंगा बाद में, बाकी ये यूजफुल नहीं है, ठीक है. फिर भी एक जस्ट फॉर योर नॉलेज आपको मालूम होना चाहिए. सो हिस्टामिनर्जिक एगोनिस्ट, सो दोज विल इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ हिस्टामाइन. So either they will be agonist to H1 receptor, H2 receptor and H3 receptor. So that's why they are non-selective agonist. First class non-selective histamine receptor agonist means they will bind to this
three receptor and they will cause activation. Okay, for example, histamine is a natural, then beta histidine is a substituted analog of histamine. So beta histidine is used in treatment of वर्टिगो. वर्टिगो मीन चक्कर. आपको अगर चक्कर आता है तो उसमें बीटा हिस्टीन यूज कर, बाकी बाकी कोई भी ड्रग यूज नहीं होता है. देन नेक्स्ट क्लास है सिलेक्टिव H1 एगोनिस्ट. सिलेक्टिव H1 रिसेप्टर एगोनिस्ट, तो इसको तो यूज ही नहीं होगा ना. 2-methyl-histamine, 3-pyridyl-ethylamine, thiazolil-ethylamine. Then selective H2 receptor agonist like dimaprid, impromedine. Then selective H3 receptor agonist, alpha-methyl-histamine or imitate. So these are the agonists, but these are not useful. They are not has a clinical application. उसको कोई यूज नहीं करता, इसका कोई यूज भी नहीं है, सिर्फ बीटा हिस्टीन यूज करते हैं और इसके ऊपर कोई क्वेश्चन भी नहीं आएगा आपको. ठीक है. नाउ H1 receptor antagonist, that is known as a antihistaminics, conventional antihistaminics or फर्स्ट जनरेशन एंटीहिस्टामाइन. एक जस्ट क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, बाकी अपन हिस्टामाइन का नेक्स्ट स्लाइड में देख लेंगे. सो उसके ये जो H1 हिस्टामिनिक एंटीहिस्टामिनिक ड्रग्स है, दे आर क्लासिफाइड इन अ डिफरेंट वे. देयर आर डिफरेंट वे. सो दे आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर एडवर्स इफेक्ट आल्सो. किसको ज्यादा एडवर्स इफेक्ट है, किसको कम है, किसको कम है, इसके अकॉर्डिंगली भी क्लासिफाई करते. So antihistaminic drug can be classified into by a different way. For example, they can be classified in the on the basis of chemical structure, on the basis of their spectrum of activity, on the basis of their adverse reaction. So यहाँ पे those H1 antagonists will have less sedation or high sedation. So according to H1 antagonist having high sedative as an adverse effect. Sedation as an adverse effect. Highly sedative H1 antagonist. Diphenhydramine, diphenhydrinate, then promethazine, hydroxyline. So these are the highly sedative antihistaminic drugs. Then moderately sedative, for example, phenidramine, cyproheptadine, meclozine, synergine, and meclozine. So they are moderately sedative. Then a mild sedative, chlorpheniramine, dexchlorpheniramine, then tirpolidine, then silamastine. These are the mild sedative. Or these three are known as a first generation antihistaminic drug. These three classes are also known as a first generation antihistaminic drug. ये तीनों क्लासेस को फर्स्ट जनरेशन एंटीहिस्टामिनिक ड्रग भी बोलते हैं. और दूसरा आता है आपका सेकंड जनरेशन एंटीहिस्टामिनिक ड्रग्स एंड दे आर नॉन सेडेटिव. इनको सेडेशन एज अ एडवर्स इफेक्ट नहीं आता. तो ये अगर ड्रग्स लेंगे आप एंटीहिस्टामिनिक ड्रग तो आपको नींद आएगी, सेडेशन होगा. ये फर्स्ट जनरेशन वाले. लेकिन सेकंड जनरेशन के अगर आपने लिए एंटीहिस्टामिनिक तो उसमें नींद नहीं आता है, कि नॉन सेडेटिंग होता है. सो फॉर एग्जांपल फेंक्सोफेनाडिन, लोरेटिडिन, डेसलोरेटिडिन, सेट्रेजिन, लेवोसेट्रेजिन, azelastine, misolastine, ebastine. So these are the second generation non-sedating antihistaminic drug. These are the first generation antihistaminic drug which have sedation as an adverse effect. And in that also they have classified again highly sedative. इनको ज़्यादा sedation होगा, इनको कम होगा, इनको उनसे भी कम होगा, लेकिन इनको नहीं होगा. याद रखो, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, आ चुका है ऑलरेडी. वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन सेडेटिव एंटीहिस्टामिनिक ड्रग. यहाँ पे एग्जांपल में से कौन से भी चार एग्जांपल देंगे आपको और एक एग्जांपल होगा सेकंड जनरेशन का. सो फेंक्सोफेनाडिन, लोरेटिडिन, डेसलोरेटिडिन, देन सेट्रेजिन, लेवोसेट्रेजिन, अज़ेलास्टिन, मिज़ोलास्टिन, इबास्टिन. याद रखो. नाउ विल सी द हिस्टामाइन एंड इट्स फिजियोलॉजिकल रोल. सो फार्माकोलॉजिकल एक्शंस ऑफ हिस्टामाइन. पहले हिस्टामाइन का एक्शन अगर आपको समझ में आया तो आपको एंटीहिस्टामिनिक का एक्शन समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं. Histamine is a tissue amine. Okay. So tissue amine, it is a autocoid released locally, synthesized locally and stored locally. उसका locally synthesized होता है, store होता है और release होता है. Release कहाँ पे होता है? Release against the antigen antibody reaction. Antigen antibody reaction या फिर allergen, जो भी allergen होता है वो अगर आपके बॉडी में आ गया तो वहाँ पे जो मास्ट सेल होते हैं, मास्ट सेल में स्टोर होता है हिस्टामाइन, तो मास्ट सेल का रप्चर होता है और रप्चर होकर हिस्टामाइन रिलीज होता है. अभी वो मास्ट सेल का रप्चर कैसे होता है उसके ऊपर भी बहुत सारा है, एक लेक्चर तो उसमें ही जाएगा. क्योंकि जब भी मान लीजिए कि आपका एक एंटीजन आ गया आपकी बॉडी में तो एंटीबॉडी जाके वहाँ पे उसको क्या करे, न्यूट्रलाइज करने का ट्राई करे. तो वहाँ पे एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगा और जो है मास्ट सेल के ऊपर एक स्पेसिफिक ग्लाइकोप्रोटीन होता है रिसेप्टर. जब एंटीबॉडी एंटीजन रिएक्शन होगा तब मास्ट सेल का वो जो रिसेप्टर है वो मैसेज देता है. उसमें इंट्रासेलुलर कैल्शियम का आयन
अंदर जाता है और बाद में उसका एक्सोसाइटोसिस होता है वो सेल का, और वहां से हिस्टामाइन रिलीज होता है। और हिस्टामाइन क्या करेगा फिर बाद में, ये एक्शन देख लेते हैं पहले। एक्शन ऑफ हिस्टामाइन ऑन फर्स्ट ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल पे क्या एक्शन होगी हिस्टामाइन की? सो डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स, डायलेशन ऑफ पल्मोनरी वेसल, दैट्स व्हाई डिक्रीज इन द पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर। डायलेशन ऑफ cerebral blood vessel, that's why increase in the decrease in the cerebral blood flow. And dilation of cerebral blood vessel, it is also responsible for the throbbing headache. blood vessel अगर dilate होंगे cerebrum के, आपके brain के, तो आपको headache होगा. Then increase in the CSF pressure. So these are the actions on the brain. Now headache is due to the stretching of sensory nerve ending around the cranial artery. आर्टरी अगर रिलैक्स होंगी तो क्या होंगे कि उसके वहां पे जो नर्व्स होंगे वो स्ट्रेच हो जाएगी, उसकी वजह से आपको हेडेक हो जाएगा. हिस्टामाइन बाय एक्टिंग ऑन इट्स रिसेप्टर लाइक H1 रिसेप्टर ऑफ द एंडोथेलियल सेल विल कॉज अ रैपिड एंड शॉर्ट लाइव्ड वैसोडाइलेशन. H1 रिसेप्टर के ऊपर एक्ट होके वैसोडाइलेशन करेगा विच इज शॉर्ट लिव्ड, मतलब थोड़े समय के लिए. देन H2 रिसेप्टर पे एक्ट होके क्या करेगा? परसिस्टेंट वैसोडाइलेशन और प्रोलॉन्ग्ड वैसोडाइलेशन on a vascular smooth muscle, then direct relaxation of smooth muscle of the capillary and venules, which leads to decrease in the blood pressure, which leads to fall in the blood pressure. Then marked flushing accompanied by sense of warmth in the man. थोड़ा सा आपको गर्मी महसूस होगी. Then increased capillary permeability leads to edema, then reduction in the plasma volume. These are the actions of histamine on the blood vessel. कि यहाँ पे क्या करेगा? ब्लड वेसल में ब्लड वेसल को डायलेट करेगा, ठीक है. ब्लड वेसल को डायलेट करके बाद उसका परमेबिलिटी बढ़ा देगा ताकि ब्लड ब्लड का जो अंदर का जो ब्लड वेसल के अंदर का जो कंटेंट है वो बाहर आ जाए. और आपको क्या होगा? बाहर आने के बाद सूजन हो जाएगा, इडिमा हो जाएगा, पेन हो जाएगा, ठीक है ना. तो दीज आर द एक्शंस ऑन ब्लड वेसल. नाउ व्हाट इज द एक्शन ऑफ histamine on blood pressure? So obviously by acting on a it will cause hypertension which cannot be reversed by antihistaminic drug adequately, and it can be reversed by adrenaline. जो हिस्टामाइन रिसेप्टर होता है हार्ट में, H2 रिसेप्टर, H2 रिसेप्टर होता है हार्ट में, कौन सा होता है? H2. So it will stimulate and it will cause hypertension. It will cause hypertension. Antihistaminic drugs, they are nothing but they are blocking H1 receptor. Hypertension caused by histamine will not be reversed by conventional antihistaminic drugs. कि जो एंटीहिस्टामिनिक ड्रग होते हैं वो जो ब्लड प्रेशर बढ़ा है हिस्टामाइन की वजह से वो उसको कम नहीं करेगी, क्योंकि वो क्या करते हैं? H1 रिसेप्टर को ब्लॉक करते हैं. और ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ा है? H2 रिसेप्टर की वजह से. Now this hypertension caused by this histamine can be reversed by use of adrenaline. And triple response. Triple response is the characteristic or important characteristic or action of your histamine. ट्रिपल रिस्पॉन्स क्या होता है मैं बोलता हूँ. अगर आपको हिस्टामाइन इंजेक्ट किया आपके स्किन के नीचे, ओके, subcutaneously, triple response will be developed when one inject when histamine is injected at the site which is 20 माइक्रोग्राम. 20 माइक्रोग्राम हिस्टामाइन इंजेक्ट किया आपके स्किन में तो क्या होगा? आपको एक टिपिकल रिस्पॉन्स मिलता है और उसको बोलते हैं ट्रिपल रिस्पॉन्स. उसमें क्या होगा? पहले क्या होगा? फ्लश, triple response plus. So initially you will develop a red line on your skin at the site of injection because of local vasodilation, ठीक है. That flush or red line will be converted into localized swelling and edema known as a wheal. After that it will be converted into flare, which is nothing but the spreading of redness in a surrounding area. Triple response is a part of normal reaction to the injury. अगर आपको कोई इंजरी होता है तो वैसे ही होता है. आपको देखो, आप स्किन के ऊपर कोई स्क्रैच आ गया आपका, वहां पे थोड़ा सा क्या होगा? रेडनेस हो जाएगा, बाद में वो थोड़ा सा सूज जाएगा और वो साइड में फैल जाएगा. तो दैट इज अ ट्रिपल रिस्पॉन्स, फ्लश, व्हील एंड फ्लेयर. सो इट इज अ नॉर्मल रिस्पॉन्स टू द इंजुरी. Now what is the action of histamine on heart? So positive inotropic and positive chronotropic action, therefore it will increase the sinus rate, heart rate, and with the increase in the blood pressure and amplitude of ventricular contraction. These are the action on blood vessel, blood pressure and heart. Action of histamine on smooth muscles. Histamine will stimulate the smooth muscle, result in the contraction. Example, in case of bronchioles, there will be bronchospasm. And because of this bronchospasm, so in case of anaphylaxis or anaphylactic reactions, आपको सांस लेना
सांस लेने में दिक्कत हो जाती है. Bronchospasm in case of asthma also. That's why antihistaminic drugs are also useful in the asthma for the treatment of asthma. Then again it has a biphasic response on the gallbladder कि gallbladder पे दोनों एक्शन होगा. H1 रिसेप्टर की वजह से कॉन्ट्रैक्शन होगा, H2 की रिसेप्टर की वजह से रिलैक्सेशन होगा. Then exocrine glands, important physiological mediator for gastric acid secretion by activating the H2 receptor. H2 receptor जो होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, आपके स्टमक में होते हैं, और उसके ऊपर हिस्टामिन जाके एक्ट होगा तो gastric acid secretion बढ़ा देगा, hyperacidity. So that's why H2 receptor blockers are used as a antacids or anti-secretory agents. Effect of histamine on CNS. Central nervous system. Two types of cells are present in the brain containing histamine. First one is a histaminergic neurons or histaminergic cells. Second one is a mast cells. So histamine is considered as a walking amine. No, sorry, not a walking. Awaking. Histamine is considered as a awaking amine. Awaking means, okay, awaking means आप जगे रहेगा वो. So histamine is considered as a waking amine in the brain, and it will increase the sensitivity of cortical and cerebral areas to the excitation और inputs. जो भी आपको stimulus आ रहा है उसके लिए stimulus आ रहा है या inputs आ रहा है brain में, तो उसके लिए उसका sensitivity बढ़ा देगा. कौन? histamine. So histamine is a waking amine in the brain, and that's why it can be histamine agonist can be used. Specific histamine 3 receptor agonist can be used in the treatment of depression or narcolepsy. Histamine cannot cross the blood-brain barrier, so it is locally synthesized in the synapse, and so it can be considered as a neurotransmitter in the CNS. Then miscellaneous action of histamine. So it also affects the lymphocytes via H2 receptor. It has action on lymphocytes. Then absorption, distribution, metabolism, elimination. So well absorbed from gastrointestinal tract, histamine is metabolized sequentially to the methyl histamine by imidazole N-methyl transferase or by MAO B to 1-methyl imidazole. ये एसिटिक एसिड हमने देखा है वो ऊपर. Now adverse reaction to this histamine is because of its pharmacological actions only. ये actually it is a naturally occurring compound in the every individual. So हाइपोटेंशन, फ्लशिंग, हेडेक, विजुअल डिस्टर्बेंस, डायरिया, डिसपनिया, ब्रोंकोस्पाज्म. ठीक है, ये हिस्टामिन के एक्शन क्या क्या होंगे आपके यहाँ पे. ब्रोंकोस्पाज्म होगा, डिसपनिया, डायरिया होगा, डिस्टर्बेंसेस, विजुअल डिस्टर्बेंसेस, फ्लशिंग, हाइपोटेंशन. ये हिस्टामिन रिसेप्टर ब्लॉकर क्या करेंगे ये एक्शन. यूजेस ऑफ हिस्टामिन. सो हिस्टामिन इज नॉट क्लिनिकली यूज्ड. So previously it was used to study the gastric acid secretion, and that is the only use. हिस्टामाइन एनालॉग, हिस्टामाइन के जैसे ड्रग कौन से बहुत सारे हैं अपने देखे ऊपर, हिस्टामाइन एगोनिस्ट, बट ऑल ऑफ देम आर नॉट यूज्ड. जस्ट ओनली वन ड्रग इज देयर which is known as a beta histidine hydrochloride. So beta histidine hydrochloride is a substituted histamine. It is a substituted histamine, and it is used to treat the frequency of episodes of the vertigo in patient with Miller syndrome. याद रखो मिनार सिंड्रोम में जो वर्टिगो होता है उसके लिए कौन सा है ड्रग यूज करते हैं, बीटा हिस्टिडीन. इट इज अ सब्स्टिट्यूटेड हिस्टामाइन एनालॉग. ठीक है, एगोनिस्ट. वर्टिगो मतलब क्या, वर्टिगो मतलब चक्कर आना आपको. ठीक है, कॉजेज द वैसोडाइलेशन एंड इंप्रूव्स द ब्लड फ्लो इन द लेब्रिंथ एंड मिडवे. एडवर्स रिएक्शन ऑफ दिस ड्रग includes ulcers and bronchial asthma or bronchospasm. Now we'll see antihistaminic drug. Okay. Before that we will see anaphylactic shock. So what do you mean by anaphylaxis or anaphylactic shock? So anaphylaxis is used to denote the clinically medical emergency caused by various kind of drugs, then food, then antigens, chemicals, allergens, pollens, etc., insect, rat bite. It is a clinical condition. It may be caused due to drugs, foods, chemicals, latex, insects, reptile bites, which is mediated by immunoglobulin E. जैसे आपको ये बाइट होंगे या फिर जैसे एलर्जन आपके बॉडी में आएगा तो आपका इम्यूनोग्लोबिन ई वहां पे जाएगा, मतलब इम्यूनोग्लोबिन ई मतलब एंटीबॉडी. ठीक है, वहां पे जाएगा, उसको कैच करेगा, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगा. उसके बाद रिएक्शन के बाद में वहां पे जो मास्ट सेल होते हैं, मास्ट सेल, ल्यूकोसाइट्स वगैरह, प्रोस्टाग्लैंड्स वहां पे वो आएंगे. मास्ट सेल का रप्चर होगा, वहां पे हिस्टामाइन रिलीज हो जाएगा और हिस्टामाइन रिलीज हो जाएगा. और जो भी हिस्टामाइन के बाद में जो एक्शंस मिलते हैं आपके, these action are nothing but the anabolic shock. So histamine is an important mediator for the
anaphylactic reaction. Okay, that's why antihistaminic are used in the anaphylactic reaction or treatment of allergic condition. So symptoms of anaphylactic shock includes laryngeal edema, bronchospasm, hypotension. The term anaphylactoid. There are two terms, anaphylaxis and anaphylactoid reaction. Okay, the term anaphylactoid is similar to the anaphylaxis, but it is not immunoglobulin E mediated and commonly caused by hyperosmotic or hypotonic solutions. For example, iodine, contrast dyes, or hypotonic solutions. So anaphylactoid or anaphylaxis, they are not the same term. देयर इज लिटिल बिट डिफरेंस कि एनाफाइलेक्सिस में क्या होता है कि एनाफाइलेक्सिस में आपको जो एक्सटर्नल फैक्टर होता है जैसे आपका एंटीजन होगा जैसे फूड में एंटीजन हो सकता है मतलब किसी किसी को होता है ना कि मुझे ग्लूटेन का एलर्जी है मुझे इसका एलर्जी मुझे उसका एलर्जी है वो एलर्जी मतलब क्या कि consumption of particular food will act as an antigen in your body and against that antibody will be produced and this antibody will try to neutralize the antigen and the reaction will cause a release of histamine from the mast cell and that's why you will get allergy like cough bronchospasm laryngospasm then reactions on skin etc so that is allergy ठीक है सो ये एंटीजन कोई भी हो सकता है एक तो फूड हो सकता है ड्रग हो सकता है केमिकल हो सकता है इंसेक्ट हो सकते हैं या फिर कोई अपने को काट लिया रेड बाइट हो गया या फिर रेप्टाइल्स जैसे रेप्टाइल्स होते हैं उसने बाइट कर लिया तो that is because of immunoglobulin E mediated reactions that is an anaphylactic shock and anaphylactoid shock means it is similar to the condition but it is not immunoglobulin E mediated यहाँ पे एंटीजन नहीं होगा ठीक है एंटीजन नहीं होगा and these kind of reaction caused by hypertonic hyperosmotic solutions then iodine contrast dyes etc that is anaphylactoid now in this case drug of choice is adrenaline so adrenaline in 1 as to 10,000 proportion it is a drug of choice in case of anaphylactic shock along with adrenaline other drugs can be used like glucocorticoids antihistaminics bronchodilators IV fluids are included in the treatment of depending upon the clinical condition of patient यहाँ पे याद रखो कि एड्रेनलिन इज अ ड्रग ऑफ चॉइस इन केस ऑफ एनाफाइलेक्टिक शॉक ठीक है ये इंपॉर्टेंट है और टारगेट्स फॉर प्रिवेंटिंग द हिस्टामाइन एक्शन अभी ये एलर्जी अभी ये एलर्जिक रिएक्शंस अभी आपको जो एलर्जिक रिएक्शन हुए जैसे ब्रोंकोस्पाज्म लैरिंजोस्पाज्म आपकी स्किन के ऊपर यूट्रिक एरियास डायली वेसोडाइलेशन है ना वेसोडाइलेशन हो रहा है आपके यहाँ पे इडिमा हो रहा है पेन हो रहा है क्यों हो रहा है ये इट इज ऑल ड्यू टू द रिलीज ऑफ हिस्टामाइन ठीक है हिस्टामाइन का रिलीज होने की वजह से ये सब हो रहा है तो अभी उसको प्रिवेंट करेंगे कैसे करेंगे तो हिस्टामाइन को रिलीज ही मत होने दो एक तो अगर होता है तो उसका एक्शन ब्लॉक करो बाय ब्लॉकिंग ऑन डिफरेंट काइंड ऑफ रिसेप्टर ये सब आर यू गेटिंग और नॉट टारगेट्स फॉर प्रिवेंटिंग द हिस्टामाइन एक्शन फर्स्ट प्रिवेंट द एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन ट्रिगर्ड बाय हिस्टामाइन रिलीज पहले क्या करो आपको जिसकी एलर्जी है वो खाओ ही मत अगर किसी को पोटैटो का एलर्जी है तो पोटैटो खाओ मत और खा लिया तो क्या होगा पोटैटो अंदर जाएगा आपके पेट में वहां पे body will treat your potato as antigen and antigen antibody reaction will be triggered and after that histamine will be released and you will develop an allergy right so prevent the antigen entering in the body then next is using the physiological antagonist of histamine so adrenaline is a physiological antagonist of histamine याद रखो ये लाइन as it is क्वेश्चन आया था जीपैट में so adrenaline is a physiological antagonist of histamine ठीक है फिजियोलॉजिकल क्यों क्योंकि एड्रेनालिन का एक्शन क्या है उसके अपोजिट है हिस्टामाइन के नेक्स्ट इज बाय इंक्रीजिंग द मेटाबॉलिज्म ऑफ हिस्टामाइन बाय हिस्टामाइन मेटाबॉलिज्म ऑफ हिस्टामाइन बाय हिस्टामाइन मेटाबोलाइजिंग एंजाइम्स हिस्टामाइन पहले तो आप एक काम करो कि एंटीजन को बॉडी में आने ही मत दो ये नहीं कर पाओगे तो फिजियोलॉजिकल एंटागोनिस्ट यूज करो और वो भी नहीं कर पाओगे तो आपको जो हिस्टामाइन रिलीज हुआ है बॉडी में उसका मेटाबॉलिज्म बढ़ा दो ठीक है तो वो जल्दी मेटाबॉलाइज होके इनइफेक्टिव हो जाएगा ये भी नहीं कर सकते तो द ब्लॉक ये भी नहीं कर सकते तो यू कैन ब्लॉक द एक्शंस ऑफ हिस्टामाइन बाय ब्लॉकिंग various kind of histaminic receptors so H1 blocker H2 blocker are available H3 blockers are also being synthesized क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स जो एंटी एलर्जिक ड्रग्स होते हैं एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स होते हैं उसका क्लासिफिकेशन नाउ क्लासिफिकेशन कैन बी दे कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू different methods first method is a chemical classification on the basis of chemical structure they are classified as a this
Ethanolamines, ethanolamines in their case diphenhydramine, dimenhydrinate. These are the two drugs, ethanolamine classes. Then alkyl amines, for example, phenyramine and triprolidine, triprolidine. Then ethylene diamines, for example, mepyramine and antazoline. Then piperazine derivative, hydroxyzine, then meclizine, cyclizine, cetirizine, synergine. Phenothiazine derivative like promethazine, then triprazine, trimip, uh, trimiprazine, then piperidine derivative like cyproheptadine, loratadine, benzophenidine. Then next one is dibenzodiazepine derivative. Dibenzodiazepine derivative, for example, doxepin. These are the chemical classification. याद रखो आप, ये मेडिसिनल केमिस्ट्री में अपन बाद में अगर लेंगे पॉसिबल होगा तो ये भी फिर से क्लासेस ये क्लासिफिकेशन फिर से आएगा. Now classification according to the generations of antihistamine. So first generation antihistaminic drug, they are known as a highly sedative drugs. First generation antihistaminic drug, they are in that also they are highly sedative, moderately sedative, mild sedative. फर्स्ट जनरेशन एंटीहिस्टामिनिक ड्रग जो होते हैं उसमें फर्स्ट क्लास होता है हाईली सेडेटिव, डाइफेनाइड्रामाइन, प्रोमेथाजिन, हाइड्रोक्सिन. सो दीज आर द हाईली सेडेटिव. इनको सेडेशन एज एडवर्सिपेट है. तो ठीक है, तो ये ड्रग अगर किसने लिया और वो अगर वो बंदा काम करता है जैसे डेलिकेट मशीनरी के ऊपर काम करता है, कोई इंस्ट्रूमेंट के ऊपर काम करता है या फिर कोई ड्राइविंग करता है, तो अगर उसने ये डाइफेनाइड्रामाइन, प्रोमेथाजिन, हाइड्रोक्सिन ये ड्रग लिया है, फेनरामाइन वगैरह, तो उसको क्या होगा, ड्राइविंग करते करते ही नींद आ जाएगी, वो किसी को ठोक देगा, एक्सीडेंट हो जाएगा. सो द antihistaminic drugs which belongs to first generation, they are not prescribed for the night workers or not prescribed for the workers or the workers which are working on a delicate machinery or the drivers. Okay, so in that case second generation antihistaminic are prescribed. First generation में तीन है, हाईली सेडेटिव, मॉडरेटली सेडेटिव, माइल्ड सेडेटिव. तो हाईली सेडेटिव कौन सा है, डाइफेनाइड्रामाइन, प्रोमेथाजिन, हाइड्रोक्सिन. मॉडरेटली सेडेटिव कौन सा है, फेनरामाइन, सिप्रोहेप्टिन, मैक्लाइजिन, सिनर्जिन. अभी ये कुछ कुछ बुक में थोड़ा सा अलग दिया है क्लासिफिकेशन, बट ठीक है मैंने जो दिया है वो करो. माइल्ड सेडेटिव क्लोरोफेनोराइन, टिप्रोलिडीन एंड साइक्लाइजिन. देन सेकंड जनरेशन antihistaminic, they are non-sedative. For example, fexofenadine, loratadine, cetirizine, levocetirizine, misolastin, azolastin. ठीक है, तो ये जो ड्रग है ये आप दे सकते हो ट्रक ड्राइवर में भी, तो इससे उसको नींद नहीं आएगी और वो आराम से आपका ड्राइविंग कर लेगा. क्लासिफिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है. Pharmacological actions of H1 receptor blockers or pharmacological actions of H1 receptor antagonist. Now, antihistaminic action. So, H1 antagonist block the action of histamine on smooth muscle, GIT, bronchi, uterus, blood vessels, along with the inhibition of salivary. जो भी histamine के action थे अपने देखे थे blood vessel पे, वहाँ पे bronchi पे वो bronchoconstriction करेंगे H1 receptor. हिस्टामाइन नॉर्मली हिस्टामाइन ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन करता है, तो जो भी हिस्टामाइन का रिसेप्टर जो भी एक्टिविटी है वो उसको ब्लॉक कर देगी. कौन, H1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट. सो H1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट विल ब्लॉक द एक्शन ऑफ हिस्टामाइन ऑन स्मूथ मसल, जीआईटी, ब्रोंकाई. जीआईटी पे हिस्टामाइन का क्या एक्शन है, जीआईटी पे एक्शन हिस्टामाइन क्या करता है, इंक्रीज इन द पेरिस्टालसिस, तो एंटी हिस्टामाइनिक विल डिक्रीज. ब्रोंकाई पे हिस्टामाइन क्या करता है, इट विल कॉज ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन, तो एंटी हिस्टामाइनिक क्या करेंगे, वो ब्लॉक कर देंगे. यूटरस पे क्या करता है, रिलैक्स करता है टोकोलाइटिक से, तो यहाँ पे क्या करेंगे, वो एक्शन भी ब्लॉक को. ब्लड वेसल पे क्या करेंगे, ये वैसोडाइलेशन, इंक्रीज इन द परमेबिलिटी, तो ये जो रिसेप्टर क्या करेंगे, ब्लॉक करेंगे ऐसा. सो दीज एक्शंस आर ब्लॉक्ड बाय H1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट. दे प्रिवेंट इचिंग, इडिमा, यूट्रिकेरिया, इंक्रीज्ड गैस्ट्रिक मोटिलिटी. अभी इचिंग, इडिमा, यूट्रिकेरिया, ये तीनों दीज थ्री वर्ड्स आर एसोसिएटेड विद द एलर्जी. स्किन के ऊपर जो एलर्जी होती है आपको, दांत खाद खुजली वाला एलर्जी नहीं, ये अलग है. इचिंग, इडिमा एंड यूट्रिकेरिया, तो दैट कैन बी प्रिवेंटेड बाय H1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट. इंक्रीजिंग गैस्ट्रिक मोटिलिटी, जो भी आपका मोटिलिटी है बड़ा है हिस्टामाइन की वजह से, तो वो कम होगा. हाइपरटेंशन प्रोड्यूस्ड बाय हिस्टामाइन रिलीजिंग ड्रग्स, बट ब्रोंकोस्पाज्म एंड हाइपरटेंशन डेवलप्ड बिकॉज ऑफ अदर मेडिएटर्स, जैसे ब्रैडिकाइनिन हो गया आपका, प्रोस्टाग्लैंडिन हो गया, ये लिपोट्रांस हो गया, उसकी वजह से अगर किया तो वो नहीं ब्लॉक कर पाएंगे.
So, but bronchospasm and hypertension developed by because of other mediators other than histamine not adequately blocked by this drug. So, this drug can block the actions of histamine only. Now, other actions they are because of the blocking of other receptors like 5-HT3 serotonin receptor or alpha-adrenergic receptor. कौन से sedation and hypnosis, sedation and hypnosis or sedation in the CNS. So CNS depression is the most common adverse effect of conventional antihistaminic drug. जो H1 रिसेप्टर ब्लॉकर्स होते हैं वो जो ड्रग्स होते हैं उनका मोस्ट कॉमन एडवर्स रिएक्शन होता है सीएनएस डिप्रेशन. ठीक है, सीएनएस डिप्रेशन उसका एडवर्स इफेक्ट होता है. सो ड्राउजीनेस सेडेशन स्लीप sedation sometimes. Okay, so drowsiness sedation these are the adverse effects. So sleep and sedation are sometimes these action are beneficial also. मतलब हिस्टामाइन एंटीहिस्टामाइन ड्रग क्या करेंगे एडवर्स इफेक्ट करते हैं सेडेशन स्लीप करेंगे आपको. ठीक है, इंड्यूस करेंगे. अभी मान लीजिए कि आपको कोई जबरदस्त रिएक्शन हो गया है तो उसमें एंटीहिस्टामिनिक दे दे तो उस कंडीशन में आपको नींद आना अच्छा है दैट इज डिजायरेबल. सो सो सेडेशन इन केस ऑफ सीवियर एलर्जिक रिएक्शन दैट इज डिजायरेबल. ठीक है, वहाँ पे ठीक है, वहाँ पे डिजायरेबल. बट अगर कोई ड्राइवर है वो जा रहा है तो उसको थोड़ा बहुत एलर्जी हुआ है कहीं कसा तो उसको एंटीहिस्टामिनिक दिया है तो उसको नींद आ गई तो पूरा ट्रक या फिर पूरा लॉरी खराब कर देगा या फिर पूरा बस ठोक देगा तो उसमें नहीं चाहिए. तो sedation as an adverse effect is also sometimes useful in certain conditions, not in all conditions. So tolerance to this sedation can be developed. So with continuation use of these antihistaminic, you can develop a tolerance to the sedation. Some drugs, occasionally few drugs will cause CNS stimulation also. So restlessness, tremors, insomnia, and activate latent epilepsy by stimulation of CNS. कि सीएनएस डिप्रेशन तो एडवर्स इफेक्ट होता है उनका लेकिन कुछ कुछ ड्रग क्या करते हैं सीएनएस को स्टिमुलेट भी करते हैं एंटीहिस्टामिनिक ड्रग्स. नेक्स्ट वन इज एक्शन ऑन एटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. मेजॉरिटी ऑफ एंटीहिस्टामिनिक हैज एंटी मस्कर्निक एक्टिविटी लाइक ड्राइनेस ऑफ माउथ. ओके, सो एंटी मस्कर्निक एक्टिविटी भी है उसका एंटीहिस्टामिनिक ड्रग को. ठीक है, याद रखो. So because of that adverse effect will include dryness of mouth. So particularly antazoline and phendyramine. Phendyramine has an anti-adrenergic blocking effect. Then anti-emetic and anti-motion sickness effect. So anti-sickness or anti-motion sickness. एंटी और एंटी मोशन सिकनेस. सो मोशन सिकनेस क्या होता है एक्चुअली मैं बोलता हूँ आपने अगर कहीं ट्रैवलिंग किया है बस में जो जो बस होता है जैसे आप हर एक स्टेट का ट्रांसपोर्ट सर्विस का बस होता है जैसे यहाँ पे महाराष्ट्र में ईएसटी बोलते हैं स्टेट ट्रांसपोर्ट ईएसटी लालपरी बोलते हैं उसको. उसमें बैठेंगे आप तो बैठ के इधर उधर हिलते रहेंगे पूरा पूरा जब भी बस चल रहा है इधर उधर हिलते रहेंगे तो आप कंटिन्यूसली इधर उधर हिलते रहेंगे बिकॉज ऑफ ड्यू टू द मोशन ऑफ बस. तो क्या होता है कि आपका जो हेड है हेड क्या होता है हेड की पोजीशन कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है ना इधर उधर. तो क्या होता है जो सेंट्रल बैलेंसिंग सेंटर होता है आपका तो हेड बिकॉज ऑफ शेकिंग ऑफ हेड योर बैलेंसिंग सेंटर गेट स्टिमुलेटेड. ठीक है, आपका बैलेंसिंग सेंटर स्टिमुलेट हो जाता है क्यों कंटिन्यूस शेकिंग ऑफ हेड. तो बैलेंसिंग सेंटर स्टिमुलेट हो गया तो उसके नजदीक ही एक सेंटर रहता है उसको बोलते हैं वोमिटिंग सेंटर. As due to continuous movement of head during traveling in the bus, so your balancing center gets stimulated, and near to the balancing center there is a vomiting center, and that vomiting center also gets stimulated. Vomiting center अगर stimulate हो गया तो आपको क्या होगा vomiting आएगी. That is known as a motion sickness. So motion sickness that is due to the continuous alteration of head position in the bus due to traveling. Okay? So antihistaminic also has an anti-emetic action or anti-motion sickness action. Particularly diphenhydramine, promethazine, piperazine, these are effective in the motion sickness, but they are not effective in the vomiting due to labyrinth disturbances. लेकिन आप बस में भी नहीं हो कहीं नहीं हो फिर भी आपको वोमिटिंग हो रही है ड्यू टू लैब्रिंथ डिस्टर्बेंसेस तो उसमें वो इफेक्टिव नहीं रहेगी. ठीक है. नाउ एंटी पार्किंसन इफेक्ट आर ड्यू टू सेंट्रल एंटी मस्कर्निक एक्शन ऑफ सम एंटीहिस्टामिनर्जिक. एंटीहिस्टामाइन जो ड्रग होते हैं एंटीहिस्टामिनिक तो उनको कुछ ड्रग को क्या है कि एंटी मस्कर्निक प्रॉपर्टी है और उसकी वजह से वो एंटी पार्किंसन इफेक्ट दिखाते हैं और समटाइम्स सम ऑफ देम आर यूज्ड इन द पार्किंसन ट्रीटमेंट. कार्डियोवैस्कुलर एक्शन क्या है H1 रिसेप्टर ब्लॉकर्स के बियॉन्ड द थेरेपेटिक डोज एंटीहिस्टामिनिक ड्रग हैज अ मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग इफेक्ट लाइक क्विनिडीन. ठीक है, लेकिन थेरेपेटिक डोज में कोई दिक्कत नहीं
जो नॉर्मली प्रेस्क्राइब किया जाता है डोज उसमें कोई इफेक्ट नहीं हुआ कार्डियोवास्कुलर। अगर ज़्यादा डोज प्रेस्क्राइब किया तो मे बी आपका जो हार्ट है थोड़ा सा डिप्रेस हो जाए। लोकल एनेस्थेटिक एक्शन, सो प्रोमिथाजिन एंड डायफेनाइड्रामाइन, these are the nothing but the H1 receptor blocker, ये एग्जांपल है उनकी। प्रोमिथाजिन डायफेनाइड्रामाइन some sort of local anesthetic activity but no clinical application of the same, ठीक है, उनका है एक्टिविटी लोकल एनेस्थेटिक पर उसका यूज नहीं है। Then absorption, distribution, metabolism, elimination of your H1 receptor blockers. They are well absorbed orally and parenterally. Okay. So out of these H1 blockers, out of those H1 blockers, maclizine नाम का जो drug है, that is a long acting drug. These compounds are metabolized by hydroxylation reaction and subsequent glucouronide conjugation, and they are eliminated through urine. And these drugs are the microsomal enzyme inducers. Yeah. Now next, adverse reactions of histamine receptor blockers. So CNS पे क्या होंगे मैंने बोला है आपको। So sedation is the most prominent effect. Okay, most common is the sedation effect hypnosis along with the deciduous diplopia. अभी diplopia क्या होता है? Diplopia means double vision. जैसे आपने दो दो पैक लगाया तो आपको सामने वाला बंदा दो दिखते है ना, तो वैसे diplopia means double vision. So antihistaminic drug has adverse effect of double vision. कि अगर ड्रग ले लिया आपने तो आपको सेडेशन होता है और सेडेशन हाइप्नोसिस में आपको वो आदमी दो दिखती है, एक आदमी के बजाय दो दिखते हैं, तो डिप्लोपिया मीन्स डबल विजन। पेशेंट टेकिंग एंटीहिस्टामिनिक ड्रग शुड नॉट ड्राइव व्हीकल बिकॉज ऑफ ड्राउजीनेस एंड इम्पेयर्ड मोटर कोऑर्डिनेशन, सो टू टेक केयर। जो भी ड्राइवर्स वगैरह है, जो भी मशीनरी पे काम करते हैं, नाइट में काम करते हैं, उनको एंटीहिस्टामिनिक ड्रग नहीं देना है। इट विल कॉज ड्राउजीनेस एंड इम्पेयर मोटर कोऑर्डिनेशन, सो देयर में बी चांसेस ऑफ गेटिंग एक्सीडेंट। So extrapyramidal reaction, excitement and delirium may occur rarely. Okay, these are the CNS adverse effect of H1 blockers. Now muscarinic antagonism, because of muscarinic antagonism, dryness of mouth, blurring of vision, bladder disturbance, they are really importance. These are the adverse effects. Now on the GIT, nausea, vomiting, epigastric distress, cardiac like hypotension, sense of tightness in chest, miscellaneous. In spite of their anti-allergic action, some antihistaminic itself themselves will produce reactions, themselves are allergic reaction. ठीक है, मतलब एंटीहिस्टामिनिक का यूज क्या है कि एलर्जिक रिएक्शन में उसका यूज कर रहे हैं, जैसे यूट्रिकैरिया प्रोराइटिस, इन्फ्लेमेशन, स्किन इन्फ्लेमेशन, उसके ऊपर यूज करते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये भी केमिकल्स होते हैं, ये भी सिंथेटिक ड्रग है, इनको भी खुद की एलर्जिक रिएक्शन होती है। तो ऐसा नहीं कि आप H1 रिसेप्टर ब्लॉकर ये नाउ थेरापेटिक यूजेस ऑफ इस H1 रिसेप्टर ब्लॉकर्स जो भी एंटीहिस्टामिनिक है, उनकी थेरापेटिक यूजेस क्या है? So first one is allergic disorder. Allergic disorders like पोलिनोसिस, पोलन ग्रेन का इन्फ्लेमेशन हो गया, आपको पोलन ग्रेन का इन्फेक्शन हो गया तो आपको सर्दी हो जाएगी। आपने देखो कुछ कुछ फूल्स का स्मेल ले लिया, आपने स्मेल किया उसका, तो आपको सर्दी हो जाती है। क्यों? बिकॉज ऑफ एलर्जी। सो एलर्जिक पोलिनोसिस, ट्रीटमेंट ऑफ सीजनल है फीवर, एलर्जी सर्दी में यूज करेंगे इसको। देन स्नीजिंग जो होता है, आपको स्नीजिंग बिकॉज ऑफ एलर्जी होता है। देन स्किन के ऊपर जो एलर्जी होता है लाइक प्रोराइटिस, इजिमा, रीजनल एलर्जी, दे आर यूजफुल इन द मैनेजमेंट ऑफ दीज एलर्जी कंडीशंस। एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस, आपके जो आईज है उसमें अगर कंजक्टिवाइटिस हो गया तो उसमें भी एंटीहिस्टामाइन। मास्टोसाइटिस, एबनॉर्मल इंक्रीज इन द मास्ट सेल में बॉडी में इंक्रीज हो गया तो हिस्टामाइन रिलीज हो जाएगा, उसमें आपको ड्रग्स देना है H1 ब्लॉकर। ये एलर्जिक यूज हो गया उसका। दूसरा other uses, they are used as a hypnotic, sometimes they are used as a hypnotic because of their adverse effect। उनका adverse effect क्या है? Sedation, because of that they are sometimes used as a hypnotic like diphenhydramine and promethazine। they are also used as antiemetic like diphenhydramine, meclizine, promethazine। then in case of Parkinsonism also they have used, for example diphenhydramine and promethazine। in case of motion sickness and vertigo, प्रोमिथेजिन इज यूज्ड। प्रोमिथेजिन देखो आप जहाँ पे भी आप ट्रैवलिंग, जिसको भी गाड़ी लगती है, हमारे यहाँ पे एक टर्म है ईएसटी लागने। ईएसटी लागने मतलब जो भी ट्रैवल करता है उसको वोमिटिंग होती है, तो उसको पहले ही क्या करो, एक प्रोमिथेजिन 10 मिलीग्राम का एक टैबलेट आता है, टैबलेट का नाम है एवोमिन टैबलेट। तो उसमें प्रोमिथेजिन 10 मिलीग्राम ड्रग रहता है, तो वो एक टैबलेट दे दिया उसको तो फिर वो उल्टी नहीं करेगा बस में। सो टू प्रिवेंट द मोशन सिकनेस एंड वर्टिगो। Then they are also used as an antitussive, for example diphenhydramine, Benadryl नाम का एक कफ सिरप आता है, आपको Benadryl सुना होगा। Benadryl कफ सिरप, Benadryl जो कफ सिरप है उसमें diphenhydramine होता है,
Okay, so it is used as an antidepressant. So these are the other uses. Then allergic disorder. Allergic disorder as a hypnotic, antiemetic in Parkinsonism, motion sickness, vertigo, antidepressant. ये uses हो गए. ये हो गए आपके फर्स्ट जनरेशन. सेकंड जनरेशन वालों को भी यूज वैसे ही है, लेकिन सेकंड जनरेशन वालों को सेडेशन एज एडवर्स इफेक्ट नहीं होता है. ठीक है, उसके भी देख लेते हैं. सेकंड जनरेशन एंटीहिस्टामिन. सो मोस्ट ऑफ द क्लासिकल H1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट हैज हाई लिपिड सॉल्युबिलिटी. जो पहले वाले जो ड्रग है फर्स्ट जनरेशन, उनको जो केमिकल स्ट्रक्चर है उसकी वजह से उसका लिपिड सॉल्युबिलिटी ज्यादा है. दे कैन इजीली क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर एंड दैट्स व्हाई दे कैन एडवर्सली इफेक्ट द सीनेस लाइक ड्राउजीनेस एंड ऑल दैट. एंड उसको एंटीकोलिनेर्जिक एक्शन भी होता है, उनको एंटी प्रेडिकेटिन इफेक्ट भी होता है, सेरोटोनिर्जिक इफेक्ट भी होता है. तो H1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट जो क्लासिकल और ट्रेडिशनल और फर्स्ट जनरेशन जो है, उनको बहुत सारे एडवर्स इफेक्ट है और उनका एक्शन भी नैरो नहीं है, वो वाइड एक्शन है. तो दैट्स व्हाई सेकंड जनरेशन एंटीहिस्टामिन, फॉर एग्जांपल cetirizine, loratadine, hexofenadine, these are the drug that will not easily cross the blood-brain barrier and that they are non-sedative. Okay, इसका sedation as adverse effect नहीं होता है. They are not metabolized but they are excreted in the urine as such. ठीक है, तो इनमें से most of the drugs are the prodrugs. जैसे hexofenadine is a primary excreted in the feces. So hexofenadine is an active metabolite of terfenadine. टर्फेनाडिन नाम का ये एंटीहिस्टामिनिक ड्रग है, सेकंड जनरेशन टर्फेनाडिन. उसका एक्टिव मेटाबोलाइट कौन है? हेक्सोफेनाडिन. जैसे आपका सिट्रिजिन है, सिट्रिजिन इज सेकंड जनरेशन एंटीहिस्टामिनिक ड्रग. सो इट इज अ एक्टिव मेटाबोलाइट ऑफ योर फर्स्ट जनरेशन ड्रग नोन एज हाइड्रोक्सिजिन. हाइड्रोक्सिजिन हाइड्रोक्सिजिन एक फर्स्ट जनरेशन वाला एंटीहिस्टामिनिक ड्रग है, उसका एक्टिव मेटाबोलाइट आपका सिट्रिजिन. ठीक है, और सिट्रिजिन क्या है? सिट्रिजिन इज अ racemic mixture. याद रखो, cetirizine is a racemic mixture. D and L cetirizine is there. So after resolution, L cetirizine was isolated and L cetirizine is nothing but the levocetirizine. उसका ही बाद में उसका ड्रग बना के अभी चलता है मार्केट में, levocetirizine. These are the second generation. Now therapeutic uses क्या है उनका? Allergic rhinitis not used in the vasomotor rhinitis, urticaria, dermatographia, जो भी dermal infection होंगे. Now use देख लेते हैं फिर से. Uses of antihistaminic agents. So because of H1 blockage, they are used in the allergic condition like itching, urticaria, hay fever, insect bite, levy poisoning. Then to prevent the adverse reaction due to histamine. Because of anticholinergic property, they are used in the common cold to control the rhinorrhea, motion sickness. Then particularly prophylaxis of motion sickness, prevention of motion sickness. Then Parkinsonism and acute muscular dystonia. Then because of H2 receptor blocker, they are anti-secretory agent. They are useful in the duodenal ulcer. इसके ऊपर एक अलग चैप्टर है, वो अपन देखेंगे. Now they are also used due to their other uses like they are drug of choice for idiopathic pruritus. Synergine is a drug useful in the vertigo. Beta histidine जैसा ही use होता है. Synergine. Synergine is also first generation antihistamine. Now individual second generation antihistaminic drugs. So fexofenadine is an active metabolite of terfenadine. Then terfenadine is the first non-sedative antihistaminic was synthesized, and it was withdrawn from the market because of polymorphic ventricular tachycardia. ये जो टर्फेनाडिन जो होता है एंटीहिस्टामिनिक ड्रग सेकंड जनरेशन, तो उसको एक एडवर्स इफेक्ट है नोन एज टॉर्सेडी पॉइंट्स. ये एरिथमिया करेगा आपको, वेंट्रिकुलर टैक्यकार्डिया. एरिथमिया करने की वजह से इसको विड्रॉ किया गया था मार्केट में से, और उसका जो मेटाबोलाइट है कौन सा? फेक्सोफेनेडिन, वो अवेलेबल है, उसको नहीं है एडवर्स इफेक्ट. नाउ फेक्सोफेनेडिन डज नॉट क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर, it is non-sedative and it will not have atropinergic or cardiovascular adverse effect. Then next is loratadine. So again it is a long-acting selective peripheral H1 receptor antagonist, non-sedative. Okay, desloratadine is active metabolite of loratadine. Loratadine का metabolism होगा body में, loratadine will be converted to desloratadine. Now next one is cetirizine. Cetirizine is metabolized. It is a metabolite of hydroxyzine. Hydroxyzine जो है hydroxyzine is a first generation antihistaminic and it is converted into body into cetirizine. Cetirizine is a metabolite of hydroxyzine. H1 receptor antagonist as well as prevent the release of histamine. Cetirizine. And उसका levocetirizine, levo isomer of cetirizine having less adverse effect than cetirizine. And azalastine
H1 receptor antagonist as well as prevent the release of histamine and inflammatory reaction triggered by other mediator along with it has a bronchodilator property. सो एजालास्टिन जो है वो तो हिस्टामाइन रिसेप्टर ब्लॉकर तो है, उसके साथ साथ वो हिस्टामाइन का रिलीज भी नहीं होने देगा। बाकी इंफ्लेमेटरी मेडिएटर्स जो होते हैं जैसे ब्रैडिकाइनिन, उसके बाद लिकोट्राइन्स, देन उसके बाद आपका प्रोस्टाग्लैंडिन, उसको भी रिलीज नहीं होने देगा एजालास्टिन। कौन? एजालास्टिन। एंड दैट्स व्हाई एजालास्टिन इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ ब्रोंकियल अस्थमा। उसके ऊपर भी एक ब्रोंकियल अस्थमा ड्रग यूज्ड इन द अस्थमा, उसके ऊपर एक सेपरेट चैप्टर है, वो अपन लेंगे, ठीक है, वो उस टाइम पे मैं बोलूँ। Ibastin is new generation antihistamine that get converted into active metabolite known as carbastin. Then rupatadine. So antihistaminic without additional PA, platelet activating factor activity used in the allergic rhinitis. तो ये individual second generation हो गए. So I will save this recording once and then we'll start again.